What's up YouTube? सवेर होगी भाई. It's morning. रिमोट कर लिए. Perfect. So morning guys. So I am parked at Flying J gas station in, I think this is Hedinburg, Texas. And we are heading to Laredo, Texas, which is about 3 hours from here. So I'm just gonna do the pre-trip inspection of the truck and we'll get going. So I'll meet you right after I finish stuff. Alright guys, good morning again. So see Edinburgh to कैमरा ले गया यार. हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग अगेन. सो प्री ट्रिप कर के सारा कुछ कर के ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਐਡਿਨਬਰਗ ਤੋਂ ਲੋਰੇਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਲੋਰੇਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ. ਇਹ ਲੋਡ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ. ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਰੇਡੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ. 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵਿਊ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਰੇਡੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ. एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ गर्मी बड़ी पड़ती है भाई टेक्सास में. इतनी गर्मी, दोपहर को टेम्परेचर इधर ऑलमोस्ट 38-39 हो जाता है और यहाँ पे 31-33 तक का भी काफ़ी गर्म फील होता है. 38 तो फिर अति हो जाती है जी. 40 भी हो जाता है यहाँ पे. कल जब हम आए थे तब 40 था यहाँ पे. एनीवेज, शावर हमने ऑलरेडी ले लिया है निकलने से पहले, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिल गई थी कि हमें उधर जाना है. तो हमने क्विकली शावर ले लिया फ्लाइंग जे से और हमने अपनी जर्नी लोरेडो की तरफ शुरू कर दी है. अच्छा रोड है, नॉट बैड. धूप निकली हुई है, एंजॉय करते हुए चलते. आ जाओ, टाइम लास्ट थोड़ा और देखो. गाइस, तो मैंने अपना माइक्रोफोन अटैच कर लिया है. होपफुली यू गाइस कैन हियर मी क्लियरली.
रियर टाउन में एंटर कर चुके हैं हम। लेफ्ट साइड शेवरले डीलरशिप, राइट साइड रियर मोटेल। और डियर मैंने लगा फॉर अ सेकंड कि रियल है, बट रियल इज स्टैचू सी एक्चुअली। 30 की स्पीड लिमिट, 30 माइल्स पर आवर। 2 लेनें दी हुई हैं, क्या बात है। लॉट्स ऑफ स्पेस इन दिस टाउन। 2 लेन्स जाने के लिए, 2 लेन्स आने के लिए। लेफ्ट में DQ, भाई DQ की ब्राउनी एंड वनीला आइसक्रीम मस्ट ट्राई करना, बड़ी अच्छी डिज़र्ट है वो। आई थिंक $5-6 की आती है, $5 समथिंग की, लेकिन भाई उसका जो टेस्ट है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। आपने बोलोगे मैंने ऐसी कभी चीज़ खाई नहीं। ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं आगे, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ स्मॉल शॉप्स अराउंड, छोटी छोटी दुकानें हैं आसपास। गैस स्टेशन ऑन द राइट, 76 गैस स्टेशन। ट्रैफिक लाइट्स ऑलरेडी ग्रीन लाइट है, लेट्स सी अगर हम उसको क्रॉस कर पाते हैं। परफेक्ट, आराम से निकल गया। ये ट्रक आ गया हमारे आगे, लेकिन ये भाई कर क्या रहा है, राइट में क्यों गया? तो मुझे लेफ्ट में आना पड़ेगा। सेफ है तो लेफ्ट में आ गए हम। ये भाई स्पीड अप कर रहा है, तो भाई साहब को राइट साइड में वापस आना है, राइट लेन में। लेकिन इसकी अब लेन खत्म हो रही है, तो ये मेरे आगे आएगा। तो भाई तू आगे निकल जा, ऐसा कर, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे तेरे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, मैं कैचअप कर लूँगा तेरे को आगे जाके। आगे जाकर ट्रैफिक लाइटों पे आप खड़े होगा, कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, टाउन निकल चुका है, हम अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। मिलते हैं हम आगे चल के। Almost in Laredo, पहुंच चुके हैं। We almost in Laredo now. Just about 3.4 kilometers left. Gotta take a left turn ahead. So let's put the camera back on. It's so far. It's a beautiful city so far. I like it. It's good, pretty good. ਲਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ। हाँ जी भाई, ये अपडेट ले लो, दुखदायक अपडेट है। कहते 4-5 घंटे वेट करना पैना, साडा लोड हजे पहुंचिया नहीं हैगा। सो तब तक असी टाइम किल करते हैं एवं। देखो उधर मैं की कर रहा। सो इदा ही बस कुछ होर हुण यूट्यूब ला लवांगे, मूवी ला लवांगे, मिलते आगे चल के। हाँ जी भाई, 1000 hours later। लो जी दोस्तों, अज तुहानू दिखाने अंदरों ट्रेलर कितना का लगता है। आ तुसीं ऊपर देख रहे हो, सारी इत्थों ठंड निकल के आ रही है जो इस ट्रेलर को रेफ्रिजरेट करता है। थोड़ा लाउड नॉइस है बट मैं उधर
चेक कर रहे थे भी साफ है कि गंदा है कितना है साडी लास्ट डिलीवरी तो just checking out how my trailer looks from inside. Oh, it's pretty nice inside. It's cold. Not really dirty, it's clean pretty much. Oh, jam lagi hoye. भाई साफ ही है, लगता पूरा कोई चक्कर सा पैना नहीं चाहिए। ऐ लगता अंदर जिमें ना बस ठंड भर रही है, ठंड। माइनस नहीं 34 फ़ारेनहाइट का टेंपरेचर कीता हुआ है। तो भी ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਓ ਵੀ ਕਰਤਾ ਡੋਰ ਬੰਦ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਲਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। It's 9:30 right now, so we just went inside to the office and checked in with them, and they said that our load hasn't arrived yet. Load is coming from Mexico. It hasn't arrived yet, so we cannot do anything but wait, because that load is going to Canada from Mexico, so it's like transiting. ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So we have to wait, but we have time until 10:45 because their inspector, the guy who checks up their meat and everything, he is gonna be here till 11, and if he clears the load, then we might end up going tonight. Otherwise, we have to stay here tonight. They also mentioned to us that maybe our security guard, if there's no load, they will kick us out from their yard and we have to wait outside on the street, and then they will reopen at 9 o'clock. I like my trailer. It has all the lights and everything. Glowing, lighting up pretty good. Trailer khali hai. That trailer is empty. Abhi empty hai, but the doors are open just so that it doesn't, end up getting smell inside. So like keep it open. ਸਾਡਾ ਰੀਫਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਕਦੋਂ ਲਵਾਊਗਾ ਲੋਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੀਫਰ ਦਾ। Yeah guys, so let's fingers crossed that load from Mexico will arrive here and then we will be on our way to Canada. Otherwise we have to wait here till tomorrow, and there's no promise when it will arrive tomorrow morning too. So I think that's the part of this trucking industry, part of trucking life. Now, sometimes we get this kind of situation and we can do nothing about it, but wait. Alright guys, so I'm gonna head into truck and probably gonna spend some time, eat some dinner, and sleep. I don't know what I'm gonna do, but I'll get back to you guys in the morning. So see you in the morning, bye. Alright guys, so it's kind of like bad news, but not really bad news, but it's kind of bad news that we haven't received a call from shipper yet. Looks like our load is not here yet. We may have to stay a night here in Laredo. So I think I'm gonna end this vlog right here. Damn it. I hope that you guys like this video. If you guys do, please like and subscribe to my channel and do share as well. I really appreciate all the support from you guys. We're gonna cover our rest of the journey from Laredo to Calgary, Alberta in my next vlog, so stay tuned. So for now, good night.